Okay, let's continue with excretion and osmoregulations. Now we have started with the introductory part in the previous lecture. We have seen what is excretion and how it is different from egestion, like what type of metabolic waste are produced, right, and why it is necessary to keep on eliminating them from the body time to time. Okay, and there are different types of excretory products like ammonia, urea, uric acid. So based on that, there are three modes of excretion: ammonotelic, ureotelic, uricotelic. है ना, वो हमने देख लिया. Then as an overview, we have seen what type of excretory systems are found in lower animals. So we have seen flame cells, है ना, protonephridia, ऐसे करके lower animals में that is found. So based on that, now we have to come to the most dangerous creature on the earth, and that is human beings. So we have to see animal kingdom point of view, human beings are at the height of evolution, right? So when you say height of evolution, that means all the organ systems, all the body parts are also equally evolved. So when this kind of evolution takes place, the organ systems become much more complicated, but their functioning becomes equally more efficient. That is also to be understood, right? Now, being human beings belonging to class Mammalia, we cannot have primitive structures like protonephridia or Malpighian tubules. That is not sufficient for the size of the body that we have, right? So when you talk about the excretory system in human beings, okay, so first let us take a look at the overview. What are the different parts? Okay, and sometimes this excretory system is also denoted as urinary system in human beings. Okay, as such, there are different other types of excretion also that occurs in humans, but the most common and the major one is excretion in the form of urine. Okay, so urinary system is a major part of excretory system. So as you can see this diagram over here, in the case of human beings, when we talk about excretory system, the major organs are the kidneys. Okay, you know kidneys. How many kidneys does a normal person have? Two. Two. Very good. Okay, so they are present. Which part of the body they are present? They are present internally, right? But exactly where? Like use the words like dorsal, ventral, Dorsal part. Dorsal means back. Okay, हाँ. Dorsal means back. Ventral. Actually, it is dorsal. Yeah, they dorsal, are present towards the dorsal side. Skeleton. Yeah, they are present. नहीं, वो तो अपना spinal cord है. That is passing through the center. But when you talk about kidneys, dorsal means back. Back, हाँ. Yeah. तो वही पीछे के साइड वाला पीछे के साइड, बट किडनीज जो है पूरी तरह पीछे के साइड नहीं है, स्लाइटली इन द सेंटर, बट थोड़ा सा टुवर्ड्स द बैक. ओके, बट द मेन पार्ट इज इट इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन. हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? इट इज प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन. देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज. व्हाट इज द शेप ऑफ द किडनीज? बीन. बीन शेप, करेक्ट. राजमा खाई रही है? राजमा हाँ, अरे राजमा खाने से किडनी अच्छा रहता है. हाँ, normally it is believed that any such fruit or vegetable or grains, ना, whatever shape it has, वो consume walnut, हाँ, वो brain अच्छा रहता है. walnut खाने brain अच्छा रहता है. That is believed most of the time, right? No doubt, इन सब खाने से कोई नुकसान तो है नहीं, but it doesn't mean that you can only keep on having all this. Anything in excess is also bad, right? Okay, so ये kidney is the having the shape of beans, इसलिए राजमा को kidney beans बोलते हैं. Okay, that is the shape. So typical shape है, reniform करके भी बोलते हैं. So it's like a convex structure. Okay, the two convex sides are facing each other, as you can see. है ना? तो ये this one is the left kidney and this is the right kidney. Okay, now if you observe carefully, एकदम बारीकी से अगर दिखती है, तो left kidney is slightly above than the right kidney. It's not exactly at the same level.
हाँ. Okay, the right kidney is slightly lower, slightly. So when you draw this diagram, वो दिखना चाहिए. ठीक है. What is the reason behind that? Why is the right kidney slightly lower than the left? Liver रहता है ना. Correct. तो इसलिए. Okay, there is liver and it is only one. Okay, because abdomen जितना है उसी में सारा सामान fit करना है. Right, so it is just about adjustment. It's like when you enter a crowded train, तेरा बैग इधर कर, है ना, तेरा हाथ ऊपर कर. So same way inside our abdomen, right? So right kidney is slightly lower because of the presence of the liver. Okay, so to this right kidney now. Okay, before that, दोनों kidney के ऊपर on the upper portion you can see this triangular structure. दोनों kidney के ऊपर एक एक समोसा रखा हुआ दिख रहा है. हाँ. What is that? वो fat. What? चर्बी. It is not fats. It is an important organ. It is an important organ जो दोनों किडनी के ऊपर है. It is not associated directly with the excretory system. It is a part of endocrine system, which you will learn in 12th standard. उनको बोलते हैं adrenal glands. Okay, they are called adrenal glands. Ad means above, renal means kidney. Also called as the suprarenal glands. But इसका use क्या है? फिर important उससे hormones आते हैं, उससे hormones बनते हैं. Adrenal medulla and adrenal cortex दोनों से hormones आते हैं, and each hormone has got its own function. So that you will learn in 12th standard, वो hormonal effect. But their location is here above the kidney. ठीक है. And दूसरा exact location देखना kidney का 12th thoracic vertebrae to 3rd lumbar vertebrae के बीच में. That is the exact point. Now you are aware about the positions of the vertebral bones, है ना? So thoracic का मतलब है chest bones. Lumbar is the abdominal one. So 12th thoracic to 3rd lumbar. That is the exact region where the kidneys are present. Here numbering बहुत important है. That you have to remember. ठीक है? And these kidneys are attached to the back wall internally. Okay, see kidneys जो है ऐसे अंदर abdomen में located है. But when you are walking, moving around and all, do the kidneys keep on jumping? Of course no. They are attached by muscles so that every organ remains in their place. Getting it? Okay, that is important. So kidneys का अपना weight होता है approximately 150 grams in males and 135 grams in females. ठीक है, this dimensions and everything you have to remember. Inner surface is concave. ये जो अंदर वाला surface है. Okay, and now you can see these two pipelines, one blue and one red. Okay, जो blue one है, that is called as the renal artery. And the red one is called the renal vein. Whenever you use the adjective renal, it is understood it is kidneys. Okay, so basically overall, now we'll see the details of that, but overall, you know, kidneys ka main function is that it will filter the blood, take out all the nitrogenous and metabolic waste products, filter it out, produce the urine. Okay, so for that, the renal artery, this blue one, is the one that constantly keeps on supplying blood to the kidneys. You will learn about circulatory system in the 12th standard. So this is a part of circulation. Okay, renal artery. Getting it? It is passing something called as deoxygenated blood to the kidneys. ठीक है? So kidneys में से ये waste matter जब जा रहे हैं, blood filter हो रहे हैं. Okay, so remaining blood after filtration comes out through the renal vein and goes back into the body circulation. Okay, now if you observe the renal artery and the renal vein both, the diameter of which one looks bigger?
artery. Why the diameter of renal vein is less as compared to artery? Because artery में वे ये We are talking अरे about वो renal artery and renal vein, no? हाँ वो मैं बता रही हूँ, जाता है वो रेनल आर्टरी से इम्प्योर एयर अंदर, ऑक्सीजन मिक्स एयर अंदर जाता है तो See here in this context, अभी जैसे मैंने बताया renal artery में it is the impure blood which is going to the kidney and kidneys उसको filter कर रहे हैं. So filter करने के बाद जो blood बाहर आ रहा है that quantity will be less than the blood which is going inside. हाँ तो blood जो बाहर निकल रहा है renal vein से वो quantity कम हो गया. That's why smaller diameter. Getting it? Because अगर सेम डायमीटर रखते थे ना तो क्या हो जाता कि रीनल वेन में ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता. तो बॉडी हैज प्लान्ड इट दिस वे कि जो ब्लड अंदर जा रहा है उसका डायमीटर बड़ा रखो बिकॉज ज्यादा ब्लड जा रहा है. फिल्टर करके जो ब्लड बाहर आ रहा है इट इज हैविंग लेस क्वांटिटी सो लेट इट बी लेस. दैट्स द प्लानिंग. गॉट इट? ओके. अभी किडनीज के अंदर क्या है वी विल कम टू इट लेटर. ओके बाकी का एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट देख लेते हैं. So as you can see over here from the inner portion of the kidney, renal artery, renal vein का हो गया. ठीक है. किडनी के अंदर urine is produced by filtering the blood. Okay. Now that urine has to come out of the kidney. Directly kidneys से ही body के बाहर नहीं जाते. Right. So from the kidneys there are two long pipelines you can see over here. ये दोनों tubes. They are called ureters. Okay, the two long tube-like structures coming out of the kidneys, emerging out, going in the downward direction. They are called as ureters. So we have a pair of ureters, each one coming from each kidney. So it's a long muscular tube. See the length of the ureter, 25 to 30 centimeter in length. एक लंबे रूलर जितना. Okay, so you can understand lumbar vertebra वाला portion है abdominal region. From there it has to go down almost till the tail region. So that is why it is 25 to 30 centimeter. Okay. So what is the role of these ureters? Simply to keep on transferring the urine collected from the kidneys all the way down to this sac-like structure which is called urinary bladder. Urinary bladder में urine को जमा करते जाना. Got it? Now whenever we use the word bladder, it is for storage. It's a sac-like structure for storage, or to be more precise, temporary storage. तो जैसे हम लोग gall bladder बोलते हैं. So it is for temporary storage of the bile which is produced in the liver. As and when required, it is secreted out. यहाँ पर भी ऐसे ही है कि urinary bladder का function है to temporarily store the urine which is continuously formed in the kidneys. So in a normal healthy individual, kidneys are functioning continuously. Continuously the blood is being passed on to the kidney, continuously the filtration is taking place, continuously the urine is being formed and it has been passing on to the bladder. Got it? Okay, abnormal conditions and all we will see towards the end. Right? So abhi important, very important point. Okay, now we are considering this assuming that the person is in a standing position या in a normal upright position. ठीक है कि kidneys है. Okay, urine नीचे आ रहा है from the ureters getting collected in the bladder. What will happen when a person lies down or when a person stands in an inverted position? Will the urine go back to the kidney? ऐसा होगा या ऐसा कुछ काम करने के पहले कोई ऑप्शन है कि यूरेटर को फोल्ड करके साइड में रख दिया? नहीं. So there is a mechanism for this also. Okay, मतलब कैसा है ना कि for example I'll show you this way. Okay,
कंसिडर दिस टू बी द ब्लैडर, ठीक है। सो अभी ऊपर से ऐसा ट्यूब आएगा, यूरेटर्स, and the bladder is getting filled up, but the ureters are not opening directly from the top of the bladder. ureter कैसे आते हैं, ऊपर से पीछे से आएगा and ऐसे turn and then it opens, so that even if the person is lying down, वो थोड़ा सा ureter तक आ जाएगा but kidneys तक नहीं जाएगा. Getting it? That is the mechanism how it is arranged. अगर डायरेक्टली ऊपर से ओपनिंग रहता तो क्या होता, प्रॉब्लम, किडनी बोलेगा बेचा हुआ माल वापस नहीं लेना. यस, गेटिंग इट. सो फॉर दैट रीजन नेचर ने ऐसे डिजाइन किया उसको, ठीक है. ओके, नाउ सी द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, वी हैव वन यूरिनरी ब्लैडर. इट इज अ मस्क्यूलर sac like structure, and that is the reason it is like flexible. कि when it is not having any urine, it is having a distended part. पर जैसे जैसे उसमें यूरिन बढ़ता जाएगा तो वो बलून की तरह उगने लगेगा. Getting it? So urinary bladder has got a particular capacity, right? कि continuously यूरिन तो बन रहा है, यूरेटर से नीचे भी आ रहा है, ठीक है. Now once the bladder starts getting filled up, okay, 50 ml, 100 ml, 150 ml, बढ़ता जा रहा है. As and when it is getting filled up, this wall of the bladder starts expanding, stretching होगा, and there are nerves which are connected to the bladder wall. जैसे एक particular point के बाद stretching होगा, say approximately 250 ml, 300 ml के बाद, the nerves will pass on the stimulus to the brain, and that is the time when what happens? You understand? Getting it? That is the time when the brain will send a message back to this position. It is high time, start searching for a proper place. Getting it? तो वो stretch muscles होते हैं या stretch receptors होते हैं. Okay, and अच्छा, ये जो ureter के base पे जो ऐसा inverted triangular portion मैंने बताया, उसका नाम है trigone. That you have to remember. उसके एपेक्स पे यूरेथ्रा का ओपनिंग है. अच्छा, ये ट्राइगोन, सॉरी दिस वन, ये जो नीचे ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, वो ट्राइगोन, उसके टिप पर यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग है, ठीक है. ओके, नाउ यूरिनरी ब्लैडर का जो कवरिंग है एक्सटर्नली, दैट इज बाय पेरिटोनियम. ओके, एंड पेरिटोनियम के अंदर वाले लेयर इज अ मस्क्यूलर लेयर, and that is the reason it is flexible enough. तो यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल्स हैं उसका नाम है डेट्रूसर मसल्स. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, डेट्रूसर मसल्स करके, एंड दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. ओके, तो बाहर वाला लॉन्जिट्यूडिनल, बीच वाला सर्क्यूलर, फिर से लॉन्जिट्यूडिनल. सो बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट it becomes easy for the bladder to stretch when it is getting filled up. And then there are stretch receptors present towards the outside, कि जैसे ही वो मसल स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, it will be sending a message to the brain. Okay, and you can understand why it is smooth muscle, because filling of the bladder and its stretching is an involuntary activity, correct? but उसके बाद जो होगा वो voluntary होना चाहिए. Getting it? So as the brain keeps on receiving the message, that time after a certain limit, now tell me approximately in a normal adult human being, what is the capacity of the bladder? Capacity. कितना यूरिन होगा नॉर्मली? 500 ml. Okay, approximately 500 ml, but it can go up to 750 ml के आसपास तक भी कर सकते हैं. Okay, depends upon the person obviously. वो बेबी कैसे, फिर बेबीज को स्टिमुलेट नहीं मिलता क्या? मिलता है ना, बट सी कैसा हो जाता है ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टॉयलेट ट्रेनिंग.
ठीक है कि we human beings have socially evolved ना, unlike other animals. Getting नहीं it? पर डॉग्स वो लोग भी गए तो एक पॉइंट पे जाके घर थे. हाँ मतलब से वो उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट है. इफ यू सी स्ट्रे डॉग्स एंड ऑल, वो कहीं पे ऐसे जाते नहीं है, उनको जाना हो तो कहीं भी चले जाएंगे. यू सी एवरी अदर एनिमल फॉर दैट मैटर. बट जो पेट डॉग्स होते हैं उनका अलग है. पेट डॉग्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि घर में अगर है तो किधर भी नहीं चलेगा, यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. वो टॉयलेट ट्रेनिंग बोलते हैं उसको. तो इवन फॉर स्मॉल बेबीज एज यू आर आस्किंग, दोस हु आर वेरी स्मॉल इन्फेंट्स जो होते हैं, उनके लिए तो ये सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है, तो दे विल जस्ट डू इट वेरेवर दे आर. ओके, बिकॉज एंड दूसरा क्या हो जाता है ना कि एज एंड व्हेन अ पर्सन ग्रोस, ओके, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर के उधर जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं. So in case of small babies, these muscles are not strong. So that is why, and their bladder is also very small. The capacity to hold urine is also very less. So as and when it gets filled, they just pass it on. But उनको over a period of years, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको सिखाते हैं. Right? They are taught कि how to control, how to release at the right time. Right? That is the way their muscles become stronger. Okay, and this can also become a problem in the very old age. Right, so after a certain age in life, these muscles again become weak. So that time also this becomes a problem where the person is not able to hold for a long time, and this situation can arise. So it's ultimately associated with the muscles which are present over here. So at the tip, जहाँ से urinary bladder end होता है, okay, then there is a tube-like structure called urethra. It is through the urethra that the urine is passed out. Okay, so passing out of the urine from the urethra is the process which is called micturition. Ultimately it is urination, but passing out of the urine through the urethra, technical word for that is micturition. यहाँ पे लिखा है देख. Micturition मतलब passing out urine. ठीक है? So that time what happens is at the tip of the bladder there is a circular muscle present जिसको बोलते हैं sphincter muscles. Okay, you can see here urethral sphincters करके लिखा है. It is between the urinary bladder and urethra. So it's like a person has reached a position where the bladder is full and the person just wants to go. उस टाइम पे लाइफ का कोई टेंशन सामने नहीं आता है, सबसे बड़ा यही चलता है. बड़े से बड़ा पहलवान भी हो तो ढीला पड़ जाते हैं. Getting it? But when the right time comes, okay, and the person is in a correct position to pass out the urine, that time these muscles, sphincter muscles between the urinary bladder and the urethra, they are relaxed, and these are voluntary muscles. Got it? ये voluntary, and ये voluntary होना भी चाहिए, right? In babies and all which I said just now, उसमें ये वाले muscles जो होते हैं ये weak होते हैं, उनको सिखाया नहीं गया कि muscles कैसे strong रखना. In fact, there are like doctors भी बोलते हैं कि इससे related there are exercises available to keep these muscles strong. ये भी जरूरी है. Okay, it is the truth because ये muscles को जितना strong रखेंगे, old age में उतना तकलीफ कम होगा. In the young age when you are healthy and all that time you don't realize. Okay, but after a certain age in life when these muscles become very weak ना, उसका reason यही है. ठीक है? But there are both the extremes. See, in a normal person, when these sphincter muscles are present and a person is socially evolved, proper training मिला है, ठीक है? So the person will understand when to do, how to do, and what not to do. Okay, but at any given situation, it is always advisable that whatever is the size of the urinary bladder, a person should not hold for too long. ये भी जरूरी है. because बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड करे तो क्या होता है? स्टोन्स, हाँ कह सकते हैं. स्टोन्स मतलब ऐसा है, स्टोन्स का मेन रीजन ये है कि बॉडी में फ्लूइड्स कम है, एंड उसका और एक बड़ा रीजन ये है कि लाइक यू आर लिविंग इन अ प्लेस वेयर द वाटर व्हिच यू कंज्यूम इज हार्ड.
हार्ड वाटर में ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं ना, वो ज्यादा बड़ा रीजन। ओके, एंड फ्लूइड्स का इंटेक कम हो तो ओके, एंड होल्ड करने का ये है कि देयर इज अ हाई चांस दैट द यूरिन कैन गो बैक टू द किडनी अगर ज्यादा होल्ड किए तो। और बहुत ज्यादा अगर होल्ड किए तो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एंड द मसल्स अराउंड द ब्लैडर, they will ultimately become weak. Now, once in a while, depending on the situation, if you are forced to hold, that's a different thing. But every time if you do that, then over a period of years, the muscles will become very weak. Okay, तो इसलिए होल्ड करना गलत है। अप टू सर्टेन एक्सटेंट ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दिया देखना कि एवरेज कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर इज अराउंड 700 ml. ओके, so urinary bladder is when it is half filled, that time itself these stretch receptors get activated. मतलब 500 ml 400 500 ml के ऊपर आ जाते हैं ना, तब से वो सेंसेशन शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इम्पल्सेस देना शुरू कर देते स्पाइनल कॉर्ड कि द ब्लैडर इज गेटिंग फुल, एंड दैट टाइम देयर इज अ कॉन्शियस डिजायर, मतलब वो मन में आ जाता है कि हाँ अब जाना है। इन द नेक्स्ट अवेलेबल टाइम वन हैज टू गो। तो स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स सेंटर में इसके इंपल्सेस समझा जाता है। एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस स्फिंक्टर मसल्स, यहाँ पे देखो ये भी दो टाइप है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ओके, इंटरनल स्फिंक्टर इज इनवॉल्यूंटरी, एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज वॉल्यूंटरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है इन द इनिशियल फेज, ओके, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को स्टिमुलस मिलता है, तो ब्लैडर मसल्स विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, internal urethral sphincters will start relaxing. So up to that point, one can hold in a normal situation. Okay, but later on, what happens is the internal sphincters का भी relaxation एक limit तक पहुंच चुके हैं. Then the brain will take over, and it will send a message to the external sphincter muscles कि now it is high time, इससे ज़्यादा hold नहीं करना. And you can just imagine that situation. ऐसा जब सिचुएशन आ जाए तो कैसा लगता है। ओके, व्हेन यू आर इन सच अ पोजीशन वेयर यू डोंट गेट एनी फैसिलिटी, दैट टाइम मुंबई घूमने गए पूरा दिन तो होता है वैसा। एग्जैक्टली, व्हेनेवर, स्पेशली बिकॉज दैट इज वेयर इट इज। तो बीच में वो ऐसा अभियान निकला था ना कि सार्वजनिक टॉयलेट्स वगैरह सब, बिकॉज ये बेसिक लेकिन हाँ रहता है बट साफ नहीं रखते। आई नो, गंदा sometimes it is too bad. Nowadays थोड़ा सा बेटर हो गया है, some places they are maintained clean. अभी जैसे अपने रेलवे स्टेशन के पास देखना है ना, पेमेंट लेते हैं बट they keep it clean, AC टॉयलेट इनफैक्ट। ओके, उतना ज्यादा लेवल पे लेकर आ गए, तो इन अ वे that is good because this is अभी जैसे in a city like Mumbai, if you travel outside and especially if you have to travel for a longer time in the city, so this is something every person will require, राइट। तो ये बेसिक फैसिलिटी या बेसिक नेसेसिटी हो गया, इसको सैनिटेशन में इंक्लूड करते हैं, राइट। सो एनी पर्सन ट्रेवलिंग एनीवेयर शुड बी इन अ सिचुएशन कि अगर कभी ऐसे जाना पड़े तो उसको सोचना नहीं पड़े। मेनी टाइम्स इट हैपेंस ना कि मतलब जब बाहर निकलते हो तो इसके वजह से पानी कम पीते हैं कि जाना नहीं पड़े, राइट। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स एंड ऑल, यू सी कभी कभी कितना गंदा रहते हो, राइट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में जैसे पब्लिक भी पूरा वो टॉयलेट वाला एरिया ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं, तो इट डजंट इवन साउंड सेफ टू गो देयर। ऐसा सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ये, है ना। 2 दिन के लिए ट्रेन में रहती थी पहले, जाती थी तब, राइट, तो ऐसा प्रॉब्लम होता था। या कैलकाटा इज अराउंड 36 to 40 आवर्स ना एवरेज, बराबर है ट्रेन में, राइट। तो ये सब चीजें अगर अभी लास्ट कुछ सालों में देखा जाए तो काफी इम्प्रूव हुआ है वैसे। ऑफ कोर्स इट नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट बट स्टिल इट हैज बिकम बेटर। अब ये स्वच्छ भारत अभियान वगैरह आ गया, राइट। सो ओपन डेफिकेशन बंद करा दिए, लाइक अवेयरनेस तो आया कम से कम, ये करना चाहिए, एंड पीपल आर मेड अवेयर कि लाइक ये जो चल रहा है वो गलत है, वन शुड बी मेंटेनिंग द प्रॉपर हाइजीन, राइट। सो दैट इज वेयर वी आर मच डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, नो। ओके, सो कमिंग बैक टू द फिजियोलॉजी ऑफ दिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पेशली मैंने पेपर में भी आर्टिकल पढ़ा था इसके रिलेटेड कि स्पेशली इन द केस ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम
Okay, because of the lack of proper facilities, they get more of this kind of diseases associated with this. Even cervical cancers बढ़ जाते हैं. Okay, because in the case of females, along with the excretory system, they also have to face the menstrual cycle. So under certain situations during those days, during the days of periods and all, it becomes much more difficult to manage, especially when there is a lack of facility. तो उसके वजह से hygienic problems हो जाते हैं, diseases होते हैं. Okay, for the males, as such, if you see, it is not a very big problem. You can understand, right? Wherever they go, some or the other place will be available. One can have a good time, right? But of course, that is not advisable. Correct. Hygienically देखा जाता है वो सही नहीं है बिल्कुल भी. करेक्ट. फॉर्म जैसे जगह में देखना, कभी जाते हैं तो कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी दिखाई देते हैं, राइट? किसी पेड़ के पीछे या कहीं पर, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल. ऑफ कोर्स इट इज नॉट क्लीन, right? And it is not advisable. It can have other health effects also. It's always better to have proper sanitation facilities. So it becomes a part of the urban planning and the government to provide such facilities. And even as a person, one should understand that whenever this kind of facilities are there, and if a situation arises, it's better to use the facility rather than hold it. Of course, घर जितना clean तो नहीं होगा, but it's always better to go that rather than suffering from health problems. Right? ये सब समझना है ना? And yeah, as far as this urethra is concerned, this is the you can say the tube or the canal through which the urine is passed out, and the length of the urethra differs in males and females. Because in the females, the urethra is a shorter one, directly opening to the exterior above the vulva region. Okay, and in the case of males, the urethra is a longer one which passes through the penis, and then it opens at the tip of the penis. Okay, so that is why the length of the urethra differs. So excretory system only, this is the part which is different in males and females. Rest everything is common for both males and females. ठीक है, तो ओवरव्यू समझा सारे पार्ट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम का. ठीक है, now let's come back to the kidneys, because that is the main thing where everything takes place. बाकी तो accessory structures है ना. So now when you talk about the kidneys, as I said in the beginning, उसका फंक्शन, अगर एक वर्ड में अगर उसका फंक्शन बोलना है तो वो है फिल्ट्रेशन. करेक्ट. तो वो ब्लड को कॉन्स्टेंटली फिल्टर करा. मतलब यू कैन इमेजिन एवोल्यूशन में कैसे ये मैकेनिज्म डेवलप हुआ, राइट? कि दिस इज आल्सो रिक्वायरमेंट कि वेस्ट को निकालते ही जाना कंटिन्यूअसली. तो कॉन्स्टेंटली ब्लड का क्लीनिंग चल रहा है अंदर, है ना. अभी कभी ऐसा हम लोग बोलते हैं, सपोज कि आज संडे है, छुट्टी है, मुझे कोई काम नहीं करना, आई एम जस्ट सिटिंग एंड लेजिंग अराउंड, बट स्टिल योर बॉडी इज सो एक्टिव. सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, सारे सेल्स कितना सारा काम कर रहे हैं, वो तो छुट्टी नहीं लेते. वो छुट्टी लिए तो इमेजिन व्हाट विल हैपन, राइट? देयर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कैन चेंज, समटाइम्स स्लो, समटाइम्स फास्ट, वो अलग है, बट दे विल नेवर स्टॉप. बिकॉज़ वो रुक गए तो इट्स अ डिसऑर्डर, और सारे रुक गए तो खत्म. Correct. So here when we talk about kidneys, their function is separation and elimination of nitrogenous waste, okay, excess water and other toxic substances from the body. Now, how much amount of water is there in our body? How much amount of other toxic waste are there? Okay, how much amount of nitrogenous waste is produced? ये हर किसी के शरीर में हर बार सेम नहीं रहता. It depends on a lot of factors. Every time your diet changes, right? The amount of fluid intake in you changes. The outside temperature matters, correct? Whether you are having any other health issues, उसके हिसाब से दवाई लेते हैं, वो matter करते हैं, right? There are so many factors associated with it. But when you talk about kidneys, their main other important role is to maintain this homeostasis. ये जो chemical balance है ब्लड का एंड बॉडी फ्लूइड्स का, वो बनाए रखते. ओके, योर ब्लड और बॉडी फ्लूइड should not become too acidic, too alkaline, should not have too much of salts, too much of sugar, any other mineral ions and water also बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. करेक्ट, हर चीज को बैलेंस में रखें. At the same time, kidneys also produce something called calcitrol and renin.
Okay, calcitriol is a hormone associated with calcium metabolism, and renin is a protein digesting this one, renin का. Okay, just ये याद रखिए, kidneys produce करते हैं. Then they also produce something called erythropoietin. Whenever you use the word erythros, it means red. Erythropoiesis means formation of the red blood cells. So erythropoietin के वजह से production of RBCs is maintained. And RBCs in the blood, they are produced in the bone marrow. So imagine the connection. एरिथ्रोपोएटिन किडनी से बना, बोन मैरो को स्टिमुलेट किया, आरबीसीज बना, ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिया. गॉट इट? बिकॉज आरबीसीज जो बनते हैं ना, उनका अपना अपना लाइफ स्पैन होता है. अप्रोक्सीमेटली द आरबीसीज हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ से 125 डेज. तो आज जो आरबीसी बना है वो 125 डेज के बाद मार दिए जाएंगे. दे आर किल्ड इन द लिवर. फिर उसका आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है. आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन. तो हेम एंड ग्लोब्यूलिन. हेम इज नथिंग बट द आयरन पार्ट. वो मिनरल है तो रिसाइकल करते हैं. ग्लोब्यूलिन उसके ब्रेकडाउन से बनता है बाइल. बाइल किधर ऐड होता है? फीसस में. गेटिंग इट? ये सब कनेक्टेड है पूरी तरह से. सी द प्लानिंग. ओके, देन micturition and all we have seen. Okay, now in the case of females, the urethra is a passage having only one function, just for discharging urine. But in the case of males, it is said to be a urinogenital organ. Because urethra in the males, it is the common passage for passing urine as well as semen. Both of them, it is like the urethra passing through the penis. That is why it is associated with urinary system as well as reproductive system in males. ठीक है, उसको urinogenital organ करके बोलते हैं. Okay, okay. Now ये देखो, तूने पूछा ना infants. Okay, up to 2 years of age, small babies, they have lack of voluntary control over micturition. इसलिए उनको सिखाया जाता है. Okay, so those neurons which are connected to the external sphincter muscles, they are not developed up to this age. And in some children, their development takes a slightly more time. So up to certain years of age, they show that tendency for bed wetting. You know what is that? Right? कि छोटे बच्चों को कहीं सुला दो, उठेंगे तो, right? They will be warm and fresh. Right? And that is the reason ये सब आ गया ना, diapers वगैरह सब आ गया, so that their sleep is not affected, right? Absorb कर और लेते हैं. कहीं घूमने भी जा सकते हैं, वरना कपड़े गंदे कर देते हैं. Exactly, yes. So अपने convenience के लिए ऐसा invention है. हाँ, Right? To अच्छा some हुआ. extent, it is good. Yeah, actually, right? हाँ, Okay, yeah. So it is good for the babies also ना, because otherwise क्या हो जाता है, कभी वो गीला कर देते हैं, कई टाइम तक पता नहीं चलते हैं, वो उसी में रह जाते हैं, तो इन्फेक्शन बढ़ते हैं, है ना. दे फील ऑल्सो वेरी इनकन्वीनियंट, रैशेस वगैरह सर्दी भी हो जाता है ठंडी सर्दी भी में. हो जाते हैं, है ना. सो फॉर सच रीजन दिस इज गुड, राइट. तो डायपर बदलते रहने का, है ना. हाँ. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पेरेंटिंग इन देयर यंग एज, राइट. ओके, नाउ सी द LS of the kidney, उसका स्ट्रक्चर. Okay, as you know, it is bean shaped, as you can see. हाँ, ठीक है, और and अंदर फ्लावर जैसा. okay, not bad. हाँ, वैसे ही याद रखते थे हम लोग 10th में. Yeah. तो सबसे पहले when you talk about any organ, तो सबसे हम देखेंगे कि उसका protective layers कौन कौन से. Every organ in the body has been given a proper protection, right? That is the most important requirement. तो यहाँ पर each kidney is having 3 layers of tissue. Okay, outermost is called renal fascia. Okay, this outermost renal fascia contains a thin layer of fibrous connective tissue. Now you know the meanings of all this. ठीक है, वो fibrous connective tissue तो मजबूती है. से किडनी के आसपास बोन्स तो नहीं रख सकते, करेक्ट. सो ये ऐसे इस तरह का कनेक्टिव टिश्यू दे दिया है
जो मजबूती देगा, कार्टिलेजिनस भी रहेगा, एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट वेरी वेरी स्टिफ ऑल्सो, फ्लेक्सिबिलिटी भी, ठीक है. सो दिस इज द टिश्यू, द फाइब्रस वन which anchors या connects the kidney to the abdominal wall and also to the surrounding tissue. तो उसके वजह से किडनीज अपने फिक्स पोजीशन पे रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीनल फैसिया, ठीक है. नेक्स्ट वन, सेकेंड लेयर, 3 लेयर्स जैसे बताया. मिडिल लेयर, इट इज अ मास ऑफ फैटी टिश्यू which is called the adipose capsule. What you said, na, charbi. Now you know adipose tissue. It is made up of tissue cells containing lot of fats. Correct? तो ये किडनीज है, एब्डोमिनल रीजन में है. देयर इज अ हाई चांस दैट उसको फिजिकल शॉक मिलता रहेगा. ओके, जैसे मूवीज में होता है, पेट में बुक्का मार दिया, राइट? सो दैट इज शॉक. So to some extent, this adipose tissue is able to protect the kidneys from shock absorption, which is necessary. Okay, insulation भी provide कर रहे हैं, shock absorption भी हो रहा है. That is the second layer called adipose capsule. Then the innermost layer is called renal capsule. That is nothing but a smooth, transparent, fibrous membrane. Okay, and this is continuously covering the ureters also, along with the kidney. It's a thin layer. So it's like अगर से kidney से एक ऐसा location है where blood जा रहा है, waste products निकल रहे हैं. So that is such a place where pathogens can easily attack. उस pathogens के survival के लिए सबसे best environment है वहां पर. तो pathogen ने attack किया तो मतलब infection हुआ. So this smooth muscle, this one, okay, fibrous membrane is the one that can protect against the spread of any infection in the kidney. ये उसका function. ठीक है. So wall of the kidney consists of 3 layers. Outermost called renal fascia, having fibrous connective tissue. Middle one called adipose capsule, made up of adipose tissue for shock absorption. And innermost one is called renal capsule, okay, having fibrous membrane which is smooth and transparent for preventing the spread of infection. Okay, it is a barrier against the spread of infections. ये उसका function. समझा protective layers के बारे में? ठीक है. You can see that in the diagram also. दिया है, नहीं दिया. ठीक है. Now when you take an LS of the kidney, उसका structure अगर हम longitudinal section में देखते हैं, TS लेके फायदा नहीं, because इतना clear view नहीं रहेगा. Entire thing you will be able to understand only when you take LS. Okay. So when you take an LS, okay, उसका histology जब हम study करेंगे, so basically the entire region internally is divided into 2 parts. The outermost, the dark, the light pink structure which you see, वो है renal medulla, the inner part. And जो बाहर का dark portion है, that is the cortex. So outer dark region is called cortex, inner light one is called medulla. Normally किसी भी structure में, किसी भी organ में, when it is divided into 2 parts like this, outer one is cortex, inner one is medulla. जैसा अभी मैंने adrenal gland बताया. In that also, when you see the section which you will learn next year, there is adrenal cortex, adrenal medulla. Even in the case of ovaries in females, there is ovarian cortex, ovarian medulla. So ये terms ऐसे use करते हैं. Cortex is always the outer portion, medulla is always the inner portion. ठीक है? Now in this cortex, ये जो cortex है, it is outer, it is red colored and a granular region. ठीक है? But the main functional part is located in the medulla. Cortex में there are something called Malpighian bodies, convoluted tubules and blood vessels. अब ये Malpighian और convoluted क्या है? We will come to that. ठीक है? Medulla, which is the inner region, it is pale red in color. And it has got a striated appearance, ऐसे lines होंगे, striations.
अभी के लिए इतना याद रखो कि मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. नाउ मैल्फिजियन बॉडीज, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये चारों एक स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं which is present in large numbers in the kidney, जिनको हम बोलते हैं nephrons. Each kidney consists of around 1.2 million nephrons. Each nephron is a very tiny filtering unit. उसका स्ट्रक्चर हम इसके बाद देखेंगे. तो each nephron consists of these parts. तो नेफ्रॉन के कुछ हिस्से कॉर्टेक्स में हैं, तो उसके कुछ हिस्से मेडुला में. And then in the medulla portion, they are arranged in a conical manner to form something called renal pyramids. ये जो दिख रहा है ऐसे कप जैसे दिख रहा है, you said flower जैसा. ये देख, there's 1 2 3 4 5 6 7 of them. Each one is a renal pyramid. Okay, ठीक है. And ये जो cortex portion है, sometimes they extend into the medulla in between, and वो column like structures बनते हैं between the pyramids. उनको बोलते हैं columns of Bertini, also called as the renal columns. And pyramid का जो narrow tip है उसको बोलते हैं renal papilla. Okay, now you can see over here all these pyramids, they are converging on one side. ये जो yellow portion है, रेड वाला रीनल आर्टरी जो अंदर जाके ब्रांचिंग हो रहा है रीनल आर्टरी, एंड आर्टरी इज ब्रांचिंग आउट एंड सेंडिंग ब्लड टू एवरी पिरामिड. ओके, एंड अंदर से ब्लू वाले ब्लड वेसल्स का भी ब्रांचिंग आ रहा है, रीनल वेन. करेक्ट, सॉरी, वन सेकेंड. ब्लू वाला इज रीनल आर्टरी, रेड वन इज रीनल वेन. डायमेंशन देखिए, ठीक है. तो रीनल आर्टरी ब्लू वन, इट इज एंटरिंग एंड ब्रांचिंग आउट, okay, supplying blood to the kidney, and the red one is the one which is collecting the filtered blood back. उसके अलावा you can see just below the pyramid, you can see there is a thing called minor calyx. All the minor calyx converge to form major calyx. Just below that, all the major calyces are converging, okay, and it forms something called renal pelvis. And then the renal pelvis comes down out of the kidney as a tube, जो हमने देखा ureters. Getting it? Okay, it's like, for example, you can understand जैसे society where we live, an apartment system. Okay, there are many flats. Each flat is having one toilet, one wash basin, kitchen, sink, etc. जहाँ सब में से drainage जा रहे, so there are small drainage lines which are going from each flat. Okay, now outside the flat, all these drainage lines are converging to form larger drainage pipes. तो जस्ट खिड़की के बाहर, बाथरूम या टॉयलेट के बाहर देखना, सोसाइटी के बाहर वो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं. करेक्ट, those drainage pipes are collecting from each portion. एक वॉश बेसिन से आ रहा है, एक टॉयलेट से, एक बाथरूम से, एक किचन सिंक से, and then they are converging to form a larger drainage pipe जो वहां से सीवेज बन के सिटी सिस्टम में जाएगा. Getting it? उसी तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर भी है कि there are 1.2 million nephrons. From each nephron there is a very tiny amount of urine produced. वहां से कलेक्ट करना है, पिरामिड से कलेक्ट करना है, बड़े वाले पाइपलाइन में जाना है, यूरेटर से बाहर निकालना. Now when you say एक 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली जितना लेंथ है किडनी का, उसमें 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स है. तो एक एक नेफ्रॉन का साइज कितना होगा, कितना यूरिन उसमें बनता होगा. So imagine the amount of waste being collected and see the network of this pipeline.
गेटिंग इट? समझ रहे हैं अरेंजमेंट? नाइसली कॉम्प्लिकेटेड राइट, बट ब्यूटीफुली प्लान, सब नेचर ने किया, देखो दैट इज द फन, है कि नहीं? ओके सो ठीक है, रीनल पेल्विस इज आल्सो कॉल्ड रीनल साइनस, वो याद रखना, इट इज द फनल शेप्ड एरिया, ठीक है, एंड दैट पोर्शन थ्रू विच द यूरेटर लीव्स द किडनी उसको बोलते हैं हाइलस, ठीक है। तो इसका एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है स्टडी का जिसको नेफ्रोलॉजी करके बोलते हैं। सो देयर आर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट, okay, it is this branch of biology that deals with structure, function and disorders of urinary system, उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड टिल हियर प्रॉपरली? ओके ठीक है, नाउ okay. Okay, now let's take a look at the detailed structure of the nephron. Okay, as I said कि they are एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि द टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स इन द किडनीज आर कॉल्ड डैश, आंसर इज नेफ्रॉन्स, एंड नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्मॉल ट्यूब्स को ट्यूब्यूल्स करके बोलते हैं, ठीक है। सो ईच स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट विच वी कॉल नेफ्रॉन्स, उसका क्या क्या लेंथ है देखो, इट इज अराउंड 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, okay, and it consists of two regions, okay, ये वाला पार्ट देख, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। now when you use the word proximal, it means near the opening or beginning, and when you use the word distal, it means away from it, ऐसे करके दो वर्ड्स का मीनिंग समझना है, ठीक है। so each nephron has got a proximal end and a distal end. Proximal end में there is a structure called glomerulus, okay, and distal end, the remaining part of the nephron, is called renal tubule, ठीक है। ये पार्ट ध्यान से सुन, this is very important, ठीक है। and now as you know कि this nephron is the tiny filtering unit, तो ये इतना छोटा इतना पतला है कि इसके अंदर ब्लड आना है, ब्लड को फिल्टर करना है, वेस्ट को निकालना है। So there is a nice flow chart that is given over here, you can see, ये देखो, renal artery which enters the kidney is supplying blood to it. अब वो renal artery अंदर जाने के बाद जो branching हो रहा है, that is renal arteriole, okay, each arteriole becomes or continues further to become the glomerulus, to enter the glomerulus. तो glomerulus में जो arteriole अंदर जा रहे हैं उसको बोलते हैं efferent arteriole, which is a branch of the renal arteriole, ठीक है। एंड efferent arteriole glomerulus के जो कप शेप स्ट्रक्चर है ना glomerulus, उसके अंदर जा रहा है, this arteriole further branches out extensively, और छोटे छोटे ट्यूब बन जाते हैं, जितना पतला इमेजिन कर सके उतना, and it becomes a mass of blood vessels जिसको बोलते हैं glomerulus, that is the glomerulus part. It is made up of blood capillaries जो efferent arteriole के continuation से बनते हैं, okay. These capillaries when they branch out extensively, at one point of time they will come out of that glomerulus, तब वो बनेगा efferent arteriole, okay, the blood vessel which is emerging out of it, we call it efferent arteriole. So efferent is the one which is entering, branching out into mass of capillaries called glomerulus, and the one which is coming out is called efferent. And efferent arteriole बाहर आने के बाद भी you can see उसी नेफ्रॉन के ऊपर बाहर से भी ब्रांचिंग करते हैं, ओके। एक तो ग्लोमेरुलस के अंदर गया, ब्रांचिंग किया, वो मास ऑफ कैपिलरीज बना,
इफेरेंट आर्टेरियोल बाहर आने के बाद भी ऑन दैट सेम नेफ्रॉन इट विल अगेन कॉइल अराउंड टाइटली एंड फॉर्म अ नेटवर्क. ये जो रेड ब्लू वाला नेटवर्क दिख रहा है ना, दिस वन, ओके, उसको बोलते हैं पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज नेटवर्क. ये पूरा नेटवर्किंग हो जाने के बाद जो वेन बन के बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रीनल वेन्यूल. Many renal venules will branch or converge together to form the renal vein which comes out of the kidney. अभी समझ रहे हैं कैसा अरेंजमेंट है? ठीक है, अमेजिंग राइट. तो ये देखिए, ये जो स्क्वायर के अंदर जो दिखाया पार्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द मैल्फीजियन बॉडी या बाउमन्स कैप्सूल करके बोलते हैं. बाउमन्स कैप्सूल ये पूरा पोर्शन है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है. So afferent arteriole is entering inside, branching into a network of capillaries, coming out as efferent arteriole. ठीक है, और ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है उसको बाउमन्स कैप्सूल करके बोलते हैं. ठीक है, तो इट इज अ ब्लाइंड कप लाइक स्ट्रक्चर, ओके, जहाँ ऊपर का हिस्सा जो है वो ओपन है बिकॉज वहां से वो आर्टेरियोल्स अंदर आते हैं. If you observe this carefully, Bowman's capsule में the portion just below the glomerulus, this one, उसको basement membrane करके बोलते हैं. There are pores present over here. Okay, and ये जो wall है ना कैपिलरी का, अपना Bowman's capsule का, उसको बोलते हैं visceral wall. And Bowman's capsule का जो दूसरा wall है on the other side, उसको बोलते हैं parietal wall. So Bowman's capsule का visceral wall and parietal wall has got slightly different structure because visceral wall में there are something called podocytes present. Okay, specialized cells as you can see. Okay, they have slit pores in between. तो जो glomerulus के blood capillaries हैं, उसमें से waste matter को filter करके ये podocytes Bowman's capsule के अंदर डालते हैं. Imagine the size and imagine the filtration. We'll see the urine formation procedure later. उसमें वापस आएगा ये पार्ट, बट अभी स्ट्रक्चर समझ लो. ये जो पोडोसाइट्स है which are present on the visceral wall are involved in the first step of urine formation. Got it? Okay. And then ये कंटिन्यू होकर यहाँ पर एक कैप्सुलर पोर्शन बनेगा. ठीक है, जहाँ पे वेस्ट कलेक्ट होता जाएगा. So at every stage the osmotic pressure is different. Okay, कि जो इफेरेंट आर्टेरियल से ब्लड बाहर निकल रहा है, दैट ब्लड प्रेशर इज अराउंड 75. ओके, यहाँ पर जो कोलॉइडल फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसमें प्रेशर है 30. एंड जो कैप्सुलर पोर्शन में वेस्ट कलेक्ट हो रहा है विच इज गोइंग फर्दर इनटू द नेफ्रॉन, उसका प्रेशर है 15. गॉट इट? ठीक है, तो अभी देखना ये जो नेफ्रॉन है Bowman's कैप्सूल है. Bowman's कैप्सूल का स्ट्रक्चर समझा अच्छे से? ठीक है, now Bowman's capsule and glomerulus together is called as Malpighian body. ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो डायग्राम दिखा है उसको Malpighian body करके बोलते हैं, which consists of a glomerulus and a Bowman's capsule. ये जो डिस्क्रिप्शन अभी मैंने बताया वही. वन मोर थिंग, अगर ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो एक और चीज ध्यान में रखना है. When you draw afferent arteriole and efferent arteriole, see the difference in the diameter. Afferent का ज्यादा होगा, efferent का कम रहेगा. Because afferent is getting the blood into the nephrons. Filter होकर जो बाकी blood निकलेगा बाहर, that is efferent. ठीक है, यहां तक समझा अच्छे से? ओके, अभी यहां से निकलने के बाद this portion if you see, this lower portion of the Bowman's capsule continues further to form this tube. उसको बोलते हैं PCT, proximal convoluted tubule. As I said, proximal का मतलब near the opening.
बिकॉज यहाँ से नेफ्रॉन शुरू हुआ ना, तो शुरुआत में जो आ रहा है वो प्रॉक्सिमल, एंड में जो आ रहा है वो डिस्टल. कन्वोल्यूटेड का मतलब है हाईली कॉइल्ड, इट्स नॉट ओपन स्ट्रेट. दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वोल्यूटेड. एंड ट्यूब्यूल, वेरी टाइनी ट्यूब, तो ट्यूब्यूल बोलना सही रहेगा. तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड पीसीटी. एंड पीसीटी के बाद देयर इज अ सडन स्ट्रेट पोर्शन एज यू कैन सी. ओके, ऐसा लॉन्ग लूप जैसा स्ट्रक्चर है, उसका नाम है लूप ऑफ हेनले. इट इज गिवन, it is called as the loop of Henle. Each part of this nephron has got its own function. Function हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे देखेंगे, ठीक है. बट स्ट्रक्चर वाइज अभी समझ जाना अच्छे से कि दिस इज द मैल्फिजियन बॉडी consisting of Bowman's capsule and glomerulus both. A continuation of that is PCT, that is proximal convoluted tubule, which continues further to form the loop of Henle. एंड लूप ऑफ हेनले के बाद फिर एक कन्वोल्यूटेड पोर्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी. ओके, सो एक नेफ्रॉन का क्या क्या पार्ट्स हो गया? फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन द Bowman's capsule forming the Malpighian body, which continues further to form the PCT. PCT continuing ahead to form the loop of Henle, ending into DCT. Got it? Okay, nephron का structure is clear. Bowman's capsule is clear. Visceral wall, okay, podocytes, hydrostatic pressure and all over. Pressure के बारे में सब वापस आएगा फंक्शन के टाइम पे देखेंगे, ठीक है. अभी ये जो Bowman's capsule का neck portion है, okay, that is made up of ciliated epithelium. एंड जो नेक का ल्यूमन है, दैट एम्प्टी स्पेस इनसाइड, उसको बोलते हैं यूरिनरी पोल. सो दैट Bowman's कैप्सूल का नेक इज द वन दैट कंटिन्यूज टू फॉर्म द पीसीटी. ठीक है, पीसीटी जैसे मैंने बताया, राइट. तो पीसीटी के लाइनिंग में देयर इज क्यूबॉइडल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट हैविंग माइक्रोविलाई. ये डायग्राम में दिख रहा है, देखो. कैन यू सी दिस माइक्रोविलाई ओवर हियर? ठीक है, इट्स लाइक अ ब्रश बॉर्डर करके बोलते हैं. इसका भी एक रोल है यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक है. नेक्स्ट इज लूप ऑफ हेनले, यू. तो लूप ऑफ हेनले एज यू हैव सीन इट इज अ इलोंगेटेड वन. ऐसा है. तो ये जो पीसीटी के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. एंड टर्न होके यू शेप होके वापस ऊपर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लूप ऑफ. ठीक है. तो लूप ऑफ हेनले व्हेन यू से you have a descending limb and you have an ascending limb. Easy to understand? ठीक है. सबके फंक्शंस वगैरह हम देखेंगे वापस बाद में. ओके, दोनों वॉल का थिकनेस वगैरह डिफरेंट है. ओके, सो नाउ दिस लूप ऑफ हेनले इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, जिसको नाम दिया है वासा रेक्टा. यू हैव टू रिमेंबर दीस टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है. Okay, that vasa recta also has got a function operating the counter current system. Osmoregulation को maintain करता है. तो osmoregulation का meaning क्या हुआ? Regulating the salt and water balance in the body. Then coming to the DCT, इसका जो wall है that consists of simple cuboidal epithelium. ये urine formation का last step करता है. ठीक है. स्ट्रक्चर इफ यू विल बी वेरी क्लियर ना राइट नाउ, तो यूरिन फॉर्मेशन जब सीखेंगे तो देयर अगेन द स्ट्रक्चर विल बी रिवाइज्ड एंड द फंक्शंस विल बी अंडरस्टूड. ठीक है. नाउ ऑल दिस डीसीटी ऑफ एवरी नेफ्रॉन एंड्स अप इनटू समथिंग कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. जैसे मैंने अपार्टमेंट्स में ड्रेनेज सिस्टम का जैसे मैंने बताया कि हर एक घर से जो निकल रहा है वो डीसीटी में एंड हो रहा है. अभी जैसे मेरे फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे रहता हूं, देयर आर 4 फ्लोर्स. तो फ्रॉम ईच फ्लोर देयर इज अ पाइपलाइन कंबाइनिंग. गेटिंग इट? तो वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है. इस सारे नेफ्रॉन्स में से जो भी वेस्ट अल्टीमेटली आ रहा है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाएंगे, which is the last part of DCT itself. And this collecting tubule further opens into collecting duct.
तो यूरिन को कलेक्ट करने का मैकेनिज्म है, ठीक है। नाउ दिस नेफ्रॉन्स इन द ह्यूमन किडनीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ओके, जो लूप ऑफ हेनले जो है उसका वो मेड्यूला पोर्शन में रह जाता है। नॉर्मली हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लूप ऑफ हेनले इज अ पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। तो मेजर पार्ट ऑफ दिस कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज इन द कॉर्टेक्स, very little extends into the medulla. So most of the nephrons are cortical nephrons, and there are some other nephrons जिसके loop of Henle काफी long होते हैं, their loop of Henle runs deeper into the medulla. ऐसे nephrons को बोलते हैं juxtamedullary nephrons, ठीक है। समझा ये पार्ट्स, ये वर्ड्स क्लियर है अच्छे से, ठीक है। सो ये देख, about 1/4 of the cardiac output is supplied to the kidneys. कि जब हार्ट है, जब वो पंप करेगा, जितना ब्लड वो पंप कर रहे हैं उसका 1/4 हिस्सा किडनीज को जाता है फिल्टरिंग के लिए। इमेजिन द कोरिलेशन बिटवीन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बाकी कहाँ जाता है फिर? बाकी पूरे शरीर को भी जाना होता है ना, एवरी टिश्यू, एवरी सेल ऑफ द बॉडी। फिल्ट्रेशन के बाद? फिल्ट्रेशन के बाद प्योर ब्लड गोज टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। एंड हर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो वेस्ट कलेक्ट होके आ रहा है वो भी फिल्ट्रेशन हो जाएगा। पूरा अपने शरीर में नेटवर्क बना के रखा है। It is ensuring constantly that not a single drop of blood remains unpurified. That is the beautiful mechanism. ठीक है, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क भी समझा अच्छे से, ठीक है। ये देख कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी जहां एंड हुआ, यहाँ पे देख कलेक्टिंग डक्ट, जो पिरामिड के नीचे माइनर कैलिक्स करके आया था उधर ज्वाइन होगा ये, ठीक है। मैप समझा अंदर का, किडनीज के अंदर का, ठीक है। ओके, वन लास्ट पार्ट फॉर नाउ, दैट इज अबाउट juxtaglomerular apparatus, ठीक है। द वर्ड juxta, इसका मतलब है जस्ट सुपरपोजिंग या जस्ट नेक्स्ट टू इट। that's how I understand the word juxta, नियर बाय, ठीक है। तो अभी एफेरेंट आर्टीरियोल जो है, ठीक है, द वन विच इज एंटरिंग द बॉमेंस कैप्सूल, कुछ स्मूथ मसल सेल्स जो है वॉल के, दे आर मॉडिफाइड इन सच अ वे कि उसका जो सार्कोप्लाज्म है, मसल्स के सेल्स के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। दैट सार्कोप्लाज्म इज ग्रैन्युलर। तो ऐसे जो स्मूथ मसल के सेल्स होते हैं, ओके, एफेरेंट आर्टेरियोल के वॉल के, विच आर ग्रैन्युलर, उन सेल्स को बोलते हैं juxtaglomerular सेल्स, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है? द मास ऑफ कैपिलरीज which is arising from the afferent arteriole, ठीक है। तो afferent arteriole ultimately it's a blood vessel, arteriole, उसके वॉल में मसल्स होते हैं, and that too smooth muscles। तो उन स्मूथ मसल्स के कुछ सेल्स में जो सार्कोप्लाज्म है वो ग्रैन्युलर रहेगा। such cells are called JG cells, ठीक है। तो ऐसे नेफ्रॉन में क्या हो जाता है कि the portion where the DCT begins, okay, that means towards the end of the loop of Henle, that portion has some contact with the afferent arteriole again। तो वो टाइटली पैक्ड और डेंस एरिया रहता है, उसको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, ओके। द बिगिनिंग पोर्शन ऑफ द DCT, okay, having some packing with the afferent arteriole, dense portion, उसको मैक्यूला डेंसा करके बोलते हैं। दिस मैक्यूला डेंसा एंड द juxtaglomerular cells, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं juxtaglomerular apparatus। तो ये सेल्स क्या है, ये apparatus क्या है, वो याद रखना। इसका फंक्शंस वी विल सी ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूरिन फॉर्मेशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। पर यहाँ पे इतना एक वन वर्ड में दिया है कि ये juxtaglomerular apparatus के जो सेल्स हैं, their role is blood pressure regulation within the kidney।
why it is important for blood pressure regulation within the kidney, because renal artery से किडनी को ब्लड जा रहा है, रीजन ये फिल्टर करना है, बट किडनी के अंदर ब्लड जो है वो ज्यादा प्रेशर में नहीं जा सकता, उसका रेगुलेशन भी जरूरी। बहुत ज्यादा प्रेशर में चला गया तो फिल्ट्रेशन बराबर नहीं होगा। So if filtration does not happen properly, waste products may not be eliminated or even useful products could be passed out. वो प्रिवेंट करने के लिए ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है, which is done by this GG. Got it? ठीक है? So अभी pressure, urine formation, osmoregulation, all this we will see together as the functions of this excretory system. ठीक है? कैसा लगा ये टॉपिक? थोड़ा लेंदी था, मतलब Yeah, it is lengthy, it was complicated, हाँ, बहुत सारे जैसे- नाम है, बट एक बार समझ में आ गया ना, it is very interesting, है ना? minutely बस समझ जाना, nothing else. ठीक है? तो इसका फंक्शंस, यूरिन फॉर्मेशन वगैरह एक साथ पूरा स्टडी कर लेंगे, राइट? बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विल गो स्लो, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है? ओके।